Very good afternoon, all of you. A very good afternoon, all of you. Hope everybody is online. All right. So we'll just start off. As we've been looking at some classes programs yesterday, we will continue to do so. हम लोगों ने कल और परसों हम लोगों ने कुछ क्लासेस किए हैं, क्लासेस के कुछ प्रोग्राम्स किए हैं. सो आज के दिन में बाकी के जितने भी क्लास के प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम मंडे के दिन हमारा क्लासेस को और कई तरीके में यूज़ करना रियल टाइम प्रोग्रामिंग में हम लोग चले जाते हैं. So as we have done like classes programs yesterday and day before, today we will complete the remaining classes programs and understand object oriented programming language, object oriented programming concepts with classes, and then on Monday we will try to get into the real time programming using classes. ये हमारा मॉड्यूल्स है जहाँ पे हमको कंसंट्रेट करना है एंड हमारा जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और ये जो एग्ज़ाम हम लोग क्लियर करेंगे अगर 70% से तभी हमको हमारा इंटरनेशनल MTA सर्टिफिकेट आएगा. I repeat, once we complete this exam with a minimum score of 70%, only then you can achieve this MTA certification, which is internationally valid. So we'll have to concentrate and focus more so that we learn a lot of things and we practice a lot of things so that we can clear the exam. Right, we'll get into the programming. So we were working with something called classes. So we'll get into our IntelliJ idea wherein to start our programming. हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपना IntelliJ ID यूज करते हैं. These were the instructions for today. I repeat everybody again. Please ensure you register into the link so that we can start all the required procedures. आप सब लोग अपने वो लिंक पे जाके रजिस्टर करें जो भी रजिस्टर नहीं हुआ है ताकि आपको आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा या एग्ज़ाम का, इंटरनेशनल एग्ज़ाम का. राइट, सो कल के दिन में हम लोगों ने कई प्रोग्राम किए हैं. इन द यस्टरडेज क्लास वी हैव डन कपल ऑफ प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द क्लासेस हैव बीन यूटिलाइज्ड, हाउ द मेथड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड, what is the signature of a class, what is the signature of a method, all that we have seen in yesterday's class. Now in today's class we will try to understand the usage of classes with object oriented programming. So yesterday we have already started this and we have used some concept called inheritance. So we have done a program yesterday called usage of classes with a concept called inheritance. So हम लोगों ने कल ये inheritance का एक concept already ख़त्म कर लिया है. So अभी हम लोग दूसरा concept देखते हैं. ये concept का नाम हो गया है encapsulation. मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे जो करना चाहते हैं, अभी जो प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वो प्रोग्राम है encapsulation. Right? So we will write a program to implement encapsulation in Java. We wanted to implement, which means we wanted to show how encapsulation is utilized in Java. मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी हम लोग समझते हैं कि हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग है उसमें कैसा हमारा encapsulation यूज़ किया जाएगा. सो अभी हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. अभी यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोग्राम है हम लोग कुछ प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं. प्राइवेट जैसा हम लोगों ने सीखा है कल के दिन में एक्सेस मॉडिफायर्स. वी हैव गॉट द एक्सेस मॉडिफायर्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड देन डिफॉल्ट. Now we are using a private access modifier which will try to ensure that my method or my attribute or a variable or a class is made as private. Private means these cannot be used outside the class. Any private member cannot be used outside the class.
Now I am declaring a variable called S number, which is nothing but your serial number. Now see, once I am defining it as private and making it as serial number, then see variable serial number is not used. So it is giving me an error because it is not used anywhere. Assume that I am giving it as 10 and then later I am using it as print, sorry, system dot out dot println. If at all I give it as yes number, then see it is being utilized. But still see there is an error. Modifier private is not allowed, which means this private modifier is not allowed. Sir, why this private modifier is not allowed? See, the error was shown that it is not used, so I have used it. But still, why it is not raising me? Why it is still raising me an error? Because, sir, whatever you are giving it is in the main method, which is a public static method. In the public method, I want to create it as a private, so which is not allowing me. If at all I do the same thing, instead of writing it in the method, if at all I do the same thing in the class, see there is no error. Now the class member, whichever I am using it here, is considered as a private member. जब मैं यहाँ पे मेथड के अंदर लिख रहा हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है बिकॉज सर यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं वो प्राइवेट मेंबर है. मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये प्राइवेट दिखा रहा है, सो प्राइवेट एरर दिखा रहा है. प्राइवेट इसलिए दिखा रहा है कि ये जो प्राइवेट मेंबर है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? ये जो मेरा मेथड है ये मुझे प्राइवेट बनना है. जब मैं इसको प्राइवेट किया हूँ देन प्राइवेट करने से भी यहाँ पे मुझे प्राइवेट नहीं कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा मेथड है ये पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक मेथड है. यहाँ पे मैंने इसको भी निकाल लिया, देन यहाँ पे देख लीजिएगा फिर से ये अलाउ नहीं कर रहा है. सो विच मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग मी एज प्राइवेट मेंबर इन द मेथड. सो जो भी मैं प्राइवेट डिक्लेयर करना हूँ ये मेथड के अंदर नहीं दे रहा है. मैं अपना खुद क्रिएट किया हुआ एक पब्लिक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड माई मेथड, एंड ये मेथड के अंदर मैं अभी एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, प्राइवेट इंट सीरियल नंबर इक्वल टू 10. सी यहाँ पे मेरा प्राइवेट वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मेथड के अंदर. सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको भी प्राइवेट बना के दिखाऊंगा. जब ये प्राइवेट किया हूँ फिर भी मेरा वेरिएबल प्राइवेट नहीं हो रहा है. यानी what do we understand by this is, if at all you want to use your private member, you are giving it directly in the class. The private member is given directly in the class. Now instead of writing it in main method, I am writing it within the class as a private variable. Now once I write it as private variable here, now I'll create couple of private variables. Say I'll call it as serial number, and then I'll call the other one as name, public string name, and then we call the next one as private int age. Now we have got three variables, all three variables are private. मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल क्रिएट किया हूँ और ये तीनों वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल है. अभी जो मैं वेरिएबल क्रिएट किया हूँ वो मैंने क्लास के अंदर लिखा है. मैंने क्लास के अंदर लिखा है, मैंने मेथड के अंदर नहीं लिखा है. किसी भी मेथड के अंदर ये अगर किसी भी मेथड के अंदर अगर लिखते हो तो वो एरर आ जाएगा बिकॉज प्राइवेट मेंबर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे. राइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्राइवेट मेंबर इन द क्लास. Now after that, now we will just go ahead and create our own methods to get the serial number, to get the name, to get the age. We will try to create create something called your methods. So I'll just go ahead and put it as public int. I will call it as get serial number. I am creating this method for my private number.
To get this private member, I am writing it as public int get serial number. Now for this particular method, for this particular get serial number method, the method should be given with parenthesis. Now this is how I have created a method. Now this is raising an error because my method should return something called my int type. So I will put it as return serial number. This is how I am returning my serial number. If somebody is using something called get serial number, then I am calling it with the help of get SNO, which is get SNO method is calling my serial number. Similarly, when I want to get my name, then I'll use it as public string, and then I'll put it as get name. Similarly, I'll create a method here, and then I will return my name. Similarly, for the third one, so every variable that we are creating here is now converted into a proper attribute, which has both get and set methods. An attribute of a class which we are using it is given with a get method and a set method. Get method will try to give you the value, and set method will try to assign the value. I repeat, get method हमको वैल्यू पाने के लिए यूज करेंगे और सेट मेथड हम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करेंगे. आई रिपीट, गेट मेथड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू, वैल्यू देने के लिए यूज करेंगे, एंड सेट मेथड इज यूज टू असाइन द वैल्यू, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. Similarly, we will create the get method for get, which is nothing but int. So we will use get age. So this is how we have created the get methods for all the three attributes that we have created. Now we'll say return age. This is how we have got serial number which is got, and your name which is got, and age we have got. We have got three things that we have received it right now. To return the values, we have got three methods written as get serial number, get name, and here get age. Whenever you write it as set, whenever you want to give the value, that is whenever you want to add the values for your age, name, and serial number, then in that case you will write it as public void. Now you don't want to return anything, you want to only take, you want to accept. In that case I will write it as set serial number. For the set serial number, I will just go ahead and take it, and here I need to get the value, I need to receive the value. So for which I will go ahead and put it as int, I'll put it as new SNO. I'm just giving the name. To understand that I am giving a new serial number, to understand that I am calling it as new SNO. And now what we will do is we will make our age, whatever the age private member that we have it, that we are calling it as age equals to, we will call it as new SNO, which is nothing but new serial number. This is how you have got your parameter assigned with age. Similarly, for the other values, whenever you want to do it for the string, that is nothing but your name, then we'll write it as public void, and then we will put it as set name. For the set name, again we want to get the string value, that is string new name. Now after that we just go ahead and take it up, and we'll call it as your name equals to, we will put it as new name. This is how we have got your set method for your name also. As we have got your set method for your name, similarly we will try to create, जैसा हम लोगों ने name के लिए set method create किया है, उसी तरह हम लोग हमारा set age भी create करते हैं. set age अभी ये int accept करेगा, तो हम लोग लिखेंगे int new age.
एंड ये हो गया हमारा न्यू एज। और इसके अंदर हम लोग एज को देते हैं एज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे देना था एस एन ओ इक्वल टू न्यू एस एन ओ, और यहाँ पे देना है एज इक्वल्स टू न्यू एज, राइट। अभी ये पूरा मुझे सेट करेगा, नया वैल्यू को सेट करेगा। जब मैं ये सेट एस एन ओ कॉल करता हूँ तो मेरा नया वैल्यू सेट करेगा। जब सेट नेम कॉल करता हूँ तो मेरा नया सेट वैल्यू कॉल करेगा। दिस इज हाउ वी क्रिएट सेट एंड गेट वैल्यूज फॉर गेट मेथड्स फॉर एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स। अगर हमारा कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट होता है, सो उस एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हमारा मेथड्स लिखते हैं, गेट मेथड और सेट मेथड। अभी हमारा जो मेन मेथड है, वो मेन मेथड में हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो मेन मेथड का अभी तक हम लोगों ने जितने अभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक हमारा प्राइवेट मेंबर्स लिखे हैं, ये प्राइवेट मेंबर्स पूरा हमारा इस क्लास के हैं। मैं यहाँ पे अभी मेरा मेन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मेन MOBJ इक्वल्स टू न्यू मेन, एंड यहाँ पे मेरा मेन मेथड का मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। जब मैं मेन मेथड का ऑब्जेक्ट यूज करके जब मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ, यानी इसको कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, दैट इज MOBJ डॉट सेट एज, जब मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे आएगा, जब भी मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो मुझे आएगा, यानी I wanted to give the value as get age as 12. I want to give that age as 12, and then I want to give the age as MOBJ dot set name. I want to set the name as John, and then I want to put it as MOBJ dot serial number, and in this I will give it as serial number should be integer, I will give it as 1. Once I close this, now I have set the values for all my parameters. See, it is giving as SNO, no? We'll have to use set SNO. Then we'll give it as 1. So this is how I have set the values. Now whenever I print it, whenever I just go ahead and print it, say system dot out dot println, and whenever I just go ahead and print it as obj dot your get name, sorry, we'll put it as first, we'll take it as get serial number, and then we'll do the same thing for other values also. हमारा जो बाकी के वैल्यूज है उनके लिए भी ऐसा ही हम लोग पाते हैं। We wanted to get the output printed. Whenever you want to get the output printed, we are using something called get method. Whenever you want to assign the values, you are using something called set method. So यहाँ पे system capital होना चाहिए, system dot out dot println, और इसके अंदर हम लोग देते हैं MOBJ dot your age, get age. Now I am getting all these values. Whatever I am assigning it, that is done with the help of set methods, and whenever I am receiving it, I am using it with the help of get methods. Now once I go ahead and run this, जब मैं इसको रन करता हूँ, see all those values are returned. Now all these values are returned because all of these members are private and all of these members are part of my same class. ये private members जितने भी हैं ये मेरे अपने क्लास के हैं, मेरे अपने खुद के क्लास के हैं, जिसके वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं दूसरा क्लास क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे बेसिक पे चला जाऊँगा
यहाँ पे आउटपुट एंड देन सोर्स पे जाऊँगा com.company। यहाँ पे com.company में मैं अपना एक नया क्लास क्रिएट करूँगा। I will just go ahead and click on new and I'll create a Java class. I'll call this class as second COND. I'll call this class as second class. My first class is main.java and my second class is second.java. अभी जितने भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्रिएट किए हैं, जितने भी यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स मैंने क्रिएट किए हैं, वो सारे प्राइवेट मेंबर्स को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मेरा क्लास सेकेंड क्लास के अंदर ऐड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, यानी जो सीरियल नंबर, गेट सीरियल नंबर या गेट नेम या गेट एज, जितने भी मैंने 3 पैरामीटर्स का गेट ऑन सेट, 3 प्रॉपर्टीज़ का जो गेट और सेट मेथड्स मैंने क्रिएट किया है, वो सब अभी मैंने नया क्लास में यानी न्यू क्लास में कॉल कर लिया। सो अभी यहाँ पे जब मैं देखता हूँ, सो मैं इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा मेन मेथड मेन क्लास का है। सो यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट मेंबर्स है, ये सारे प्राइवेट मेंबर्स यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ, ये प्राइवेट मेंबर्स मेरे सेकेंड क्लास के हैं, यानी second.java क्लास के हैं। अभी इनको अगर मैं मेन क्लास में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है, आई विल राइट इट एज सेकेंड ये स्मॉल लेटर है, सेकेंड SEC इक्वल टू न्यू second. Now I have created the object for my second class. For the second class, whenever I want to use it, I'll write it as second dot get set age, second dot set name, and second dot set number. Similarly, second dot get serial number, second dot get name. Similarly, we just go ahead and write it as second dot get age. See what we thought, as per the definition of private, a private member of one class cannot be called in another class. एक प्राइवेट मेंबर जब एक क्लास में डिक्लेयर होता है, उस प्राइवेट मेंबर को दूसरे क्लास में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। जो मेरा सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, इनको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो कि मैं जो असाइन कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं जब असाइन कर रहा हूँ तो ये सारे असाइन हो रहे हैं। जो भी मेरा असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट पूरा मेरा सेकेंड क्लास में है, यानी मेरा मेन मेथड, मेन क्लास जो है, मेन क्लास का मेन मेथड जाके अपना सेकेंड क्लास का मेथड्स को इंटरैक्ट कर पा रहा है। सेकेंड क्लास के प्राइवेट मेंबर को, यानी सेकेंड क्लास का ये जो मेंबर है, इनको यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मेथड हम लोग लिख रहे हैं वो मेथड पब्लिक है। ये मेथड के वजह से हमारा जो प्राइवेट मेंबर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई रिपीट, the private members of a class can be accessed with the help of get and set methods, which can be declared as public. Even though there is a private member, the private member can be accessed into another class by creating a method get and a method set, by both of them declaring it as public. जैसा हमारा ये प्राइवेट मेंबर है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। अभी और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास है, अभी मेरे पास है से प्राइवेट इंट स्कूल नेम। जब मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, यानी इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, यानी सेकेंड डॉट स्कूल नेम, सेकेंड डॉट स्कूल नेम, इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्कूल नेम SCH, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। आई पुट इट एज स्कूल नेम सो दैट देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम कॉपिंग इट।
See, even though I copied, see, I am not able to use it because it is a private member. Private member cannot be accessed. इसी तरह मैं यहाँ पे एस नंबर भी देता हूँ, एस एन ओ। देख लीजिएगा, मैं एस एन ओ की भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्राइवेट मेंबर को मैं डायरेक्टली मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्राइवेट मेंबर जो जो क्लास में प्राइवेट किया जाएगा उसको हम दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल नहीं कर पाएंगे। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे कुछ पब्लिक मेथड क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा जो जो प्राइवेट मेंबर है उसको दूसरे क्लास में भी यूज कर पा रहे हैं। I repeat, even though you cannot use a privately declared value of a class into another class, which means the main.java cannot access the members, private members of your second.java, but still we can access the members by creating your get and set methods being public. ये पैरामीटर को, ये एट्रीब्यूट को हम लोग, इवन दो इट इज योर concept called, there is a concept called encapsulation, you cannot use it because क्लास के अंदर जब प्राइवेट डिक्लेयर किया जाएगा उसको हम बाहर कॉल नहीं कर पाएंगे, बाहर यूज नहीं कर पाएंगे। फिर भी जावा और एक मेथड हमको देता है जिसके वजह से हम लोग प्राइवेट गेट मेथड और सेट मेथड क्रिएट करते हैं ताकि हमारा प्राइवेट मेंबर्स को भी अपने पब्लिक क्लास के बाहर एक्सेस कर पाते हैं, हमारा प्राइवेट मेंबर्स को भी हमारे क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन विल एनकैप्सुलेट एवरीथिंग। ये प्राइवेट मेंबर को बाहर नहीं आने देगा। जो डेटा हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर उसको बाहर नहीं आने देगा। बट अगर आपको किसी भी हालत में अगर प्राइवेट मेंबर को बाहर लाना है तो हमको गेट और सेट मेथड क्रिएट करके बाहर कॉल कर सकते हो। आई रिपीटेड, द encapsulation is a concept where you bind the entire data within the class by making it as private or with some other methods will ensure that the data is not allowed out. But still, Java is allowing you to create your get and set methods so that the private members can also be accessed outside with the proper permissions. This is what is the concept of encapsulation. By default, encapsulation will not allow you to get the data out of your class, which means the private data cannot be sent outside the class. But still we can create your get and set methods to call the data outside the class. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो ये इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट है उसके वजह से हमारा जो प्राइवेट मेंबर्स है क्लास के, जो भी प्राइवेट मेंबर्स रहेंगे हमारे क्लास के, वो अपने क्लास के बाहर कॉल नहीं कर पाएंगे, यानी अपने क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करने के लिए, यानी जो इनकैप्सुलेशन सपोर्ट कर रहा है उसको ब्रेक करके अगर हमको डेटा बाहर चाहिए है तो हम लोग अपना गेट मेथड और सेट मेथड क्रिएट करके अपना पैरामीटर को अपने अपने जो प्राइवेट वैल्यूज होते हैं उनको हम लोग अपने क्लास के बाहर कॉल कर सकते हैं, अपने क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं हमारा गेट और सेट मेथड यूज करके। सो दिस इज द प्रोग्राम, आई जस्ट कॉपी इट फॉर यू। This is our first class, that is main class, and this is your second class, that is a second class where you have all of your get and set methods. This is your first program. Now we'll try to look at another program to understand simple inheritance, which we have done yesterday, but we will repeat it now. Whatever we have done yesterday, we will try to repeat it with a proper example. Now what we do, we will try to take a class which has the main method and which doesn't have a main method. हमारा जो main method है ये हमारा class है जहाँ पर हमारा main method है, and ये हमारा class है जहाँ पे कुछ हमारा main method नहीं है. So I just go ahead and take this off.
Now I will have this class but I'll not have any class implementation. बस मेरा empty class रहेगा और यहाँ पे जो मेरा main method है वो empty रहेगा. I repeat, my entire class is empty and entire main class is also empty but for a method called main method. हमारा जो main class है उसमें main method रहेगा, हमारा जो second dot java है जहाँ second class है वहाँ पे सब कुछ empty रहेगा. अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. मैं अभी यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टैटिक इंट. आई एम गिविंग इट एज नंबर इक्वल टू 100. सिमिलरली मैं दूसरा भी नंबर ले रहा हूँ स्टैटिक इंट नंबर 2 इक्वल्स टू 200. Now I have got my first member and second member here. I repeat, I have got my first member as number equal to 100 and the second member as number 2 equal to 200. Now these are the static members of my class second. ये जो मेरा second class के static members हैं num and num1, sorry num and num2. इसको हम लोग करते हैं num1 and num2. So num1 and num2 are the static members of my class second. Now what I wanted to do, I want to ensure that this second class is inherited by my main class, which means I can write it as my main class extends a class called second. My main class is extending, which means my main class is inheriting my second class. I repeat, मेरा जो main class है वो मेरा second class को inherit कर रहा है, यानी second class का डेटा को हम लोग अपना मेन क्लास में ला रहे हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो सेकेंड क्लास है उसका डेटा को मैं अपना मेन क्लास में ला रहा हूँ. अभी इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे मेरा अपना अनदर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, यानी इंट num3 एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ. इसका वैल्यू हो गया है 300. आई रिपीट, मैं यहाँ पे मेरा अपना थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज इंट num3 इक्वल टू 300. ये जो दो वेरिएबल है ये मेरा सेकेंड क्लास के हैं, ये जो तीसरा वेरिएबल है वो मेरा मेन क्लास के हैं. आई रिपीट, these two variables that I have created are part of second class and the third variable that I have created is of the main class. Now to utilize it, now whenever I want to utilize it, I can directly use it as int result. मैं int result ले रहा हूँ. अभी result equals to I can use it as num1. देखो मेरा यहाँ पे num1 आ गया है प्लस num2, मेरा सेकेंड वैल्यू भी आ गया है एंड num3 मेरा थर्ड वैल्यू भी आ गया है. यानी जब इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जब इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, जब एक्सटेंड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा num1 num2 मेरा सेकेंड क्लास से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया है, मैंने सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया है, बल्कि मैं यूज़ कर पा रहा हूँ. अगर समझो कि मैं ये एक्सटेंड्स निकाल देता हूँ, जब मैं एक्सटेंड्स निकाल देता हूँ, देख लीजिएगा यहाँ पे मुझे मेरा ये एरर आ रहा है. आई एम गेटिंग एन एरर ओवर हियर बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड. माई मेन क्लास इज़ नॉट एक्सटेंडेड. whenever I use it as extends my method called second, then see I don't have any usage. यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसा कि अगर यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, यानी सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट सेकेंड SEC इक्वल टू न्यू सेकेंड. और ये क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे लिखना होगा, हमको लिखना होगा SEC डॉट, you should write it as, you can write it as num1 plus you can write it as SEC dot num2 and you should write it as plus num3. This is how you should get your values of num1, num2 and num3. Now instead of creating an object, because both of them are inherited, that is my main class is inheriting
whenever my main class is inheriting my second class, which means instead of creating it an object, you can directly write it as num1 and you can write it as num2 plus num3. So which means the second class data is used in your main class. So whenever I am writing it, I just go ahead and write it system dot out dot println and I am writing it as res. Now this will print my sum of three values. Whenever I execute it, मेरा जो 600 बन गया बिकॉज यहाँ पे 300 है, यहाँ पे मेरा सेकेंड क्लास में 100 प्लस 200 कुल मिला के 600 हो गया. द टोटल इज नाउ 600 because I have these two values in the second class and this value, the third variable in the third class. Now I am using this as my existing values. Now what I'll do, I'll just come back here. Now I will use a method called protected int and then I will write it as sum, and I will now go ahead and use it as, here I will take the parameters int num1 comma int num2. Otherwise I will not take this for the first example. I will not take this as the first example. I will just go ahead and write it within this method. I will just go ahead and call it as int I equals to 10 and then int j equal to 20 and then k equals to, or I can write it as return, I can write it as your I plus j. अभी मेरा ये जो इंटीजर वैल्यू i plus j रिटर्न कर रहा है. अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं system dot out dot println एंड यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हमारा जो मेथड है यानी सम मेथड. देख लीजिएगा यहाँ पे जो सम मेथड है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सम मेथड है वो नहीं है. यहाँ पे जो हमारा सम मेथड है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे. सर अब अभी इसको कैसा यूज़ करेंगे सर? इसको यूज़ करने के लिए अभी हम लोग जाके लिखते हैं सिस्टम your object, that is your second sec equal to new second. Now I will just go ahead and write it as sec dot sum. See, I am able to use this now. I am able to use this now because my main method is extending my second method. Assume that मैं ये एक्सटेंड्स निकाल देता हूँ, ये जो एक्सटेंड्स है ये निकाल देता हूँ और जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा सेकेंड डॉट सम यूज़ कर पा रहा हूँ बिकॉज जैसा मैं कल के दिन में आपको बता रहा था आई कैन यूज़ दिस बिकॉज अभी ये निकाल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें. सी whenever I run it, I am able to get this sum of two numbers, that is your 30. Because I am considering this as protected. So कल के दिन में जो मैं बता रहा था ये दोनों एक ही पैकेज में लिख रहे हैं जिसके वजह से मेरा प्रोटेक्टेड वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ. अभी हम लोग और एक तरीका भी यूज़ करते हैं. अभी हमारा जो मेन मेथड है, मेन मेथड का जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी मेन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मेन mn इक्वल टू न्यू मेन. अभी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से यानी मेन के ऑब्जेक्ट से mn के ऑब्जेक्ट से मैं इस सम को यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मुझे मेरा अपना एरर दिखा रहा है. और जब यहाँ पे आके मैं करता हूँ एक्सटेंड्स एंड आई राइट इट एज सेकेंड, देन वंस आई लुक एट इट मेरा एरर निकल गया है. इसका मतलब है जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ
मेरा ऑब्जेक्ट के साथ, यानी मेरा मेन मेथड, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ मैं अपना सेकेंड मेथड का ऑब्जेक्ट्स को बुला सकता हूँ। जब ये प्राइवेट बनेगा, समझो कि ये मेरा प्राइवेट हो गया है, जब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ तो वो मुझे एरर बताएगा कि प्राइवेट कैन नॉट बी कॉल्ड, which means with my main object, with my main object, I can call only public methods and protected methods. I cannot call any private method, so I will make it as protected, and I can also make it as public to access it. Yani we'll go ahead and understand with paint. We'll go ahead and understand this with paint. Now assume that this is my main class. Now this is my, sorry, assume this as my second class and assume this as my main class. I repeat, ये जो मेरा मेथड जो क्लास है ये मेरा अपना मेन क्लास है, एंड यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरा सेकेंड क्लास है, right? This is my second class and this is my main class, and in the main class I have got an object called mn. ये जो main class का मेरा object हो गया है mn, and ये जो मेरा second class का object हो गया है sec. Main is a class and the object for the main class is mn. Second is a class and the object for second class is sec. Whenever I want to use my main class methods, ये जो मेन क्लास में जितने भी मेथड रहेंगे, ये मेन क्लास में जितने भी मेथड रहेंगे, अगर मैं इन मेथड को यूज करना चाहता हूँ, से समझो कि यहाँ पे मेरा जो एक मेथड है पब्लिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मेथड है डिफॉल्ट, एक दूसरा मेथड हो गया है पब्लिक, तीसरा मेथड हो गया है प्राइवेट, और चौथा मेथड हो गया, द फोर्थ मेथड ऑफ दिस क्लास इज प्रोटेक्टेड. नाउ एज दिस इज ए मेन क्लास, ये मेरा मेन क्लास है, तो मेरा अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर पाएगा, because my main object has access to all the members of the class. My main object has the access to all the members and member classes of the main class. जब ये main का object बनेगा, mn मेरा main का object बनेगा, तो mn को हर एक चीज का जो भी मेरा क्लास में रहेंगे वो हर एक चीज का एक्सेस मिलेगा, यानी मेरा mn ये हर चीज जो भी यहाँ पे रहेंगे इसको एक्सेस कर पाएगा. अगर मेरा mn ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा mn क्लास है, अभी समझो कि मेरा mn क्लास यानी माय mn क्लास, आई रिपीट, माय mn क्लास that is nothing but my main class is extending, which means inheriting, extends your second class. Whenever the main class is extending your second class, which means main class is trying to get all the methods, main class is trying to get the access of all the methods and members that are there in the second class. जैसा हमारा मेन क्लास में डिफॉल्ट मेथड, पब्लिक मेथड, प्राइवेट मेथड, प्रोटेक्टेड मेथड है, उसी तरह हमारा मेथड्स यहाँ पे भी है. हम लोग दूसरा सिंबल लेते हैं ताकि हम समझ सकें ये हमारा, अदरवाइज हम लोग लेके चलते हैं कि दूसरा स्टाइल. ये हो गया है हमारा डिफॉल्ट, ये हो गया है हमारा पब्लिक, ये हो गया है हमारा पब्लिक, ये हो गया है हमारा प्राइवेट, और ये हो गया है हमारा प्रोटेक्टेड. जैसा हमारे क्लास में, मेन क्लास में कई मेथड है, उसी तरह हमारे सेकेंड मेथड में भी कई मेथड है. As we have multiple methods in your main, similarly you have
multiple methods in your second also. See, this is how you have got your all the values, all the methods like default, public, private and protected. जैसा मेन क्लास का ऑब्जेक्ट हर एक चीज का अपना खुद का एक्सेस होगा, उसी तरह हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी इन हर एक चीज का एक्सेस रहेगा. I repeat, my second object will also have the access to all the members like this. Now if you could look at whenever this is happening, which means whenever my main class is inheriting, whenever my main class is inheriting my second class, which means ये जो second class के जो values है, second class के जो methods है, इनको हम लोग यहाँ पे access करना चाहते हैं, which means we wanted to get the data from second class into the main class. So ये जो second class के जो data है, इनको हम लोग यहाँ पे मेन क्लास में लाना चाह रहे हैं. जब लाना चाह रहे हैं तो हमारा जो mn ऑब्जेक्ट है, ये mn ऑब्जेक्ट को एडिशनल पावर्स आ जाते हैं, यानी ये हर एक चीज को एक्सेस कर पाएगा. ये जो हमारा जो mn है, mn ऑब्जेक्ट है, ये पहले की तरह ये डिफॉल्ट को भी एक्सेस कर पाएगा, पहले की तरह ये हमारा पब्लिक को भी एक्सेस कर पाएगा, पहले की तरह ये हमारा प्राइवेट को भी एक्सेस कर पाएगा, ये mn हमारा प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर पाएगा. इसके अलावा ये जो mn है, ये मेरा पब्लिक को एक्सेस कर पाएगा और ये मेरा अपना डिफॉल्ट को भी एक्सेस कर पाएगा, आई मीन प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर पाएगा. Now my mn object, whatever I am using it, this has got additional features. ये जो mn है, इसको नया फीचर्स आ गए, ताकि जो भी मेरा सेकेंड क्लास है, ये सेकेंड क्लास के मेंबर्स के जो भी पब्लिक बन रहे हैं, जो भी मेरे सेकेंड क्लास के पब्लिक मेंबर है, जितने भी पब्लिक मेंबर है, जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर है, उनको मैं अपना मेन ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सक रहा हूँ. आई रिपीट, my main mn object have got additional powers where I am able to use my mn object to access not only my regular methods, whatever the regular methods that I have it, apart from these regular methods, I am able to use all the public things and all the public and protected members of my second class also. Second class members are also accessed with the help of mn object only. That is what we understood by something called inheritance. This is how we use something called inheritance. So now whenever I create an object, instead of creating a second class object, we create a single mn object, and we are now able to use num1 plus num2 plus num3, and at the same time you are using mn object to go ahead and use your sum, that which is there in the second class. Second class के members को भी हम लोग यहाँ पे utilize कर पा रहे हैं, right? This is how we use something called inheritance. मैं इसको copy कर लेता हूँ. I'll just copy all of this. Now this is your main for the second program. This is your class which has your main method, and this is your class which is being inherited. This is your class which is being inherited. Alright, you should have two classes. Right now I've got two classes which are being inherited. Now I'll write the next one in next page, so that you have one page in each of the programs, so that you don't get confused. So मैं ऐसी भेजूंगा आपको, एक एक प्रोग्राम, एक एक पेज में एक एक प्रोग्राम बना के भेजूंगा, ताकि आपको confusion ना आए. So this is how we use something called inheritance. Now we'll try to look at another example for inheritance, so that we understand it in detail, because inheritance is a concept which is very important in your Java programming with object oriented concepts. We will try to see
the other concept, that is you will try to understand this inheritance with another example so that we understand this inheritance. So we will now, instead of looking simple inheritance, now we will try to look at something called multi-level inheritance. I repeat, instead of learning using simple inheritance, we will try to use something called multi-level inheritance. Yani whenever we have been learning theory, so ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करते हैं हम लोग. सिंपल इनहेरिटेंस यूज करने के वजह हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, नॉट मल्टीपल. टेक इट फॉर श्योर, वी आर नॉट यूजिंग मल्टीपल, वी आर यूजिंग मल्टी लेवल. We are using multi-level, not multiple. So we are getting into our notepad. We'll now understand what is this. Otherwise, we'll get into paint itself. Paint में ही जाके समझते हैं what is this multi-level inheritance. से समझो कि मेरे पास एक क्लास है क्लास ए, और मेरे पास दूसरा क्लास है क्लास बी, और मेरे पास तीसरा क्लास है क्लास सी. Now we'll just go ahead and call it. This is my class A and this is my class B and this is my class C. I've got class A and class B and class C here. Now what is happening here is my class A is inherited by class B. यानी मेरा class B का जो भी फीचर्स रहेंगे ये फीचर्स मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ. प्रीवियस एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो ये जो एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हम लोग रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, यानी सेकेंड क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग मेन क्लास में यूज कर रहे हैं. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नया एग्जाम्पल में क्लास ए के प्रॉपर्टीज को क्लास बी में, और जो क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है यानी क्लास ए का वैल्यूज क्लास बी में ला रहे हैं. यानी इसको कैसा लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं योर क्लास बी एक्सटेंड्स योर क्लास ए, दैट इज नथिंग बट योर ए. अभी हमारा क्लास ए का पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स हम लोग क्लास बी में यूज कर रहे हैं. उसी तरह जब हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस करना चाहते हैं, यानी we wanted to get the values of B into A, B into C, which means we will now go ahead and write it as your class B values are inherited into class C. इसका मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, so we should write it as your class C is extending, which is nothing but extends your B, which means class B का वैल्यू class A में आ रहे हैं. So अगर class A का वैल्यू, यानी अगर मेरा जो class A का वैल्यू जब class B में आ रहे हैं तो which means यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी ये का वैल्यू यहाँ पे पड़े हुए हैं. A के जो भी वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे B में यूज कर रहा हूँ. जब मैं B के सब वैल्यूज अगर C में यूज कर रहा हूँ, यानी मैं इन दोनों को यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ. यानी जितने भी A से आ रहे हैं उनको यूज कर सकता हूँ, और जितने बाई डिफॉल्ट B में है उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ. What do I understand by this? All of this is I can utilize both the default values of B and whatever I am getting it from A, that can also be used in C. मैं फिर से बता रहा हूँ, A से जो B में आ रहा है उनको यूज कर सकता हूँ, एंड B में जो बाई डिफॉल्ट है उनको भी यूज कर सकता हूँ. आई रिपीट, C में मैं A से जो आ रहा है उनको यूज कर सकता हूँ, और B में जो है उनको भी यूज कर सकता हूँ. Now what we will do to write this program, now we will take a break. It is already halfway, we are done with 1 hour. So we will now take a break for 5 minutes and we'll continue. I repeat everybody, we will take a 5-minute break and then continue again. I repeat everybody, we will take a 5-minute break for our attendance and continue again. हम अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और बाद में कंटिन्यू करते हैं.
ये जो ब्रेक में हम लोग अपने अपने कैजला ग्रुप में अटेंडेंस देते हैं, राइट। थैंक यू, विल कनेक्ट अगेन विद इन 5 minutes. So we'll continue. With it. So whatever we have discussed theoretically enough, we will do that with the help of program. अभी हम लोग जो अभी theoretically देखे हैं उसी को अभी हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम यूज करके हम लोग करते हैं. सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं. सो वी वांटेड टू राइट आर मल्टीपल क्लासेस. अगर हमारा एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको कितने क्लासेस चाहिए यहाँ पे टू लुक एट दिस थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. हाउ मेनी क्लासेस डू यू नीड? वी नीड 3 classes. But how many classes do we have right now here? We have only 2 classes. That is, main is 1 class, second is 1 class. Now we'll try to get the third class also. So now we'll just go ahead and create the third class. We'll right click on this and click on new Java class. Now I'll create another class. The class name I'll put it as third class. Now if you look at, I've got third class, I've got second class, and I've got my main class. Assume that my third class is class A. My third class is class A, second class is class B, and my main is class C. जहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ये जो A क्लास है, जो क्लास A है, ये मेरा जो कोडिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है थर्ड, और जो हम लोग कोडिंग में यूज कर रहे हैं B, वो हो जाएगा मेरा सेकेंड, और ये जो C होएगा वो मेरा मेन होएगा. This will be my main class, right? This is of I've got 3 classes here. Now this third class will be extended by second class will be extended by main class. So उसी को अभी हम लोग लिखते हैं. Now we write that third class is not extending anything. Now the second class is extending your third class. Now we'll write it as extends, and then we will write it as third class. Now this third class data is brought into your second class. Now second class data can be brought into the first class. That is, मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा. It is already there. We are writing it as, otherwise I'll take it off and write it again.
extends second class, which means मैं नया पेंट ले लेता हूँ to explain it better. Now मैं मेरा अपना मेन क्लास ले लिया हूँ और मेरा जो सेकंड हो गया है सेकंड क्लास और जो मेरा थर्ड हो गया है थर्ड क्लास. Now this is your main and this is your second and this is your third. Now this is how you have got your classes. अभी क्या हो गया है, whatever the inheritance that is happening, which means the data is coming from your third to second because my second is inheriting third. Similarly, the second value is being second data is inherited or the second class is inherited by main class, which is indirectly understood that my some portion, that is the public or protected portion of my third class, can also be accessed into my main class. This is what is the logic. Now to do it, now what I'll do, I will now try to use it as, now I will try to come here and create some method. Say I will write it as public void my print, and here I will not pass anything. I will write it as string str, otherwise I will return some value. I will write it as string. Now I'll call it as str equal to, I will put it as I am in third class. I am in third class. Now this value is part of something called your string method. Now I am writing it as return str. Now this is what I am returning it. I will call it a small str. Now it can be used. Now this string myPrint method is a method which is part of third class. So मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, ये जो मेरा मेथड है, ये जो मेथड है, ये मेथड का नाम यहाँ पे देता हूँ. ये मेथड का नाम हो गया है myPrint. अभी यहाँ पे मेरा मेथड है myPrint मेथड. करेक्ट. अभी इसको मैं अपना सेकेंड क्लास में यूज करना चाहता हूँ. जब मैं सेकेंड क्लास में इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके मेरा अपना सेकेंड क्लास का वेरिएबल, सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी मेरा सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. सेकेंड sec इक्वल टू न्यू सेकेंड. अभी मेरा सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके सेकेंड डॉट, जब मैं यूज करना चाहता हूँ sec डॉट, अपना जो भी यहाँ पे पब्लिक मेथड है वो पब्लिक मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ. सो यहाँ पे जाके लिखता हूँ myPrint. When I'm using it, see it is raising me an error. So whenever I'm using my sec, which is my object for your class here, see I'm not able to get this method. जो मेरा थर्ड क्लास है इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ because this is an object that I have got it. When I wanted to use it, I am not able to use it over here. Sir, why I am not able to use it here? जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, this is inheriting third, which is my public method. So why I am not able to using it? Why I am not able to use it over here? See, method myPrint is never used, which is never called. So I am calling this method into my extended method. So I can also call it as, instead of public, I am calling it as protected. Now in the protected, when I am trying to use it, I am not able to use it over here. Now the same thing I will try to use it with the help of third. Say th equal to new third. Once I have done this,
and then I'm using it as th dot. If at all I want to use my object, my method, whatever the method that I have got it, I'll make it as public. And here whenever I try to get this particular my print, see, I'm not able to utilize it. I'm not able to get it because even though my second class is extending third, I'm not able to get it over here. Sir, why I'm not able to do it when I'm using multi-level? Is there any challenge to do it as such? So what we will do, we will call this as protected and we will try to see it with multiple examples. Say once we have this like this, we will try to use it in a different level. So we will call this as protected here. We will not create any object over here. We will not do anything over here. Now what we will do, we will also create another protected method, protected void, and then we will try to put it as int, sorry, protected int, we will put it as int, protected int my print 1, and then we are putting it in the method. Here we will call it as int I equals to 10, and then we will just go ahead and put it as return I. Got it? This is how I am returning my I. Now I've got the print method here in the first class, and I'm getting the print method in the print 1 in the second class, and I've got main method here. Now in the main method, in the main class, in the main method, now I try to create an object for my main class. That is, I'll just go ahead and put it as the object for the main class mn equal to new main. And then I'm trying to create an object for my second. That is second sec equal to new second. I'm sorry, I'm calling it as second. This is how I've got it. Similarly, I've got third th equal to new third. This is how I've created the objects in my main method. And after that, whenever I wanted to use it, I'm using it as, I'm writing it as main dot, that is mn dot, I want to use my print method. This print method is there in my class here, that is the third class, that is your this class. Now this class can be utilized. Now we'll also write the objects here. I am writing it as mn object, I am writing it as sec object. Now I have the object called th object. Now with the help of mn object, I am able to call, that is with the help of mn object, I will put it here. With the help of mn object, I am able to access my print value because my third class is inherited by second class and the second class is inherited by main class. That is the reason why with the help of my mn I am able to use my print. Now I'll use it as system dot out dot println, and we will try to put it as mn dot your print. Once you execute it, see, it is part of the third class, which means this third class data is getting printed. Similarly, I'll just go ahead and do it for the second one also, that is system dot out dot println, and here I am using it as mn dot print1, which is part of my second class. So we'll just go back and put it in the diagram here.
the method name is my print one। यहाँ पे जो मेरा मेथड का नाम है वो my print one है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे आ रहा है आई एम इन थर्ड क्लास प्रिंट हो रहा है, 10 भी प्रिंट हो रहा है, यानी ये जो मेरा मेथड है प्रोटेक्टेड मेथड, मैं इसको भी यूज कर पा रहा हूँ। सो वंस आई जस्ट गो हियर, once I just come back here, I am able to use my mn object for my print method also. Got it? I am able to use my object mn for my print one also. Now after that I will use my same myin method. I will also create a method in my main class also. I will call it as public, say bool my print 2. Now whenever I am executing it, I will put it as boolean x equal to true, and then I'll just put it as return x. Now I can use this public bool my method. Now it says what is this? It is expecting something else, so we'll just put it as, for the time being, int only, and then I'll call it as int x equal to, I'll give it as 100, and then we'll say return x. Now in this case I can use it as system dot out dot println. I can use it as mn dot, I can use it as print2. But do you have print2 getting done here? My print2, do you find anything like my print2 here? Am I able to use this my print2 here? See, I cannot use it like this, but I can use an operator called this. When I use my this operator, then I can use my print. Whenever I can use an operator called this, whenever I give it as this, then immediately it will show me something called print1 or print2, or it will also show my print2 method. It will also, sorry, I have written it as my print1, is it? So I'll call it as my print2. Now I can use it as my print2 like this, and I can also use it with the help of mn, which is my print2. This is how you are using your mn object. Now the mn object is using another method called, I'm sorry, I'll take it in black. Now see, it is using my print2. Now this my print2 is also accessed by your object mn. Now the mn object is able to access the current class member and the intermediate class member and the first class member also. So all the class members are accessed by your mn object. Now we try to get into your another option. Now I'll just go ahead and see system dot out dot println. Now I will use my second dot. I want to use my print. See, I can use my print. Now once I execute it, see, it is printing all the values, and apart from all the values, it is again printing my I am in third class, which means my second object is able to communicate. My second object is able to communicate with my method that is there in my third class. ये जो मेरा सेकेंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा थर्ड क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पा रहा है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकेंड क्लास में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं मेन क्लास ऑब्जेक्ट।
एंड इसके बाद हम लोग लिखते हैं नाउ वी राइट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट println and here we try to make use of second dot my print1. If at all you look at, I can use something called second dot my print1. Unnecessarily I have put it, so I am removing it. Once I executing it, there is no error. So it is printing I am in third class and it is also printing 10, which means my second object can also communicate with its current member. Now we'll also go ahead and see whether this can communicate with main class also. Now I'll put it as your out dot println and we'll put it as second dot I want to print it as my print2, which is not possible. I'll write it as print2, which is not possible. I cannot communicate to my main class, which means whatever I am trying to do it, whatever I am trying to communicate with these two classes, which is happening, my second object cannot communicate. That is, my second object cannot communicate with my print2. This is not possible. So I repeat, whatever we are seeing here, this is not possible with my second object. With my second object, it cannot go ahead and use my main class. Similarly, when I just go ahead and try to use it, I comment it, this is not possible. Now similarly, I just go ahead and use my, whenever I want to use my third class object, in that case, if at all I run it system dot out dot println. Now in this case, whenever I want to run it, I will execute it as my third object dot I can print something called my print. When I execute it, see, it is printing me the last statement, that is nothing but your my print statement, which is part of third class. Now when I try to give the second class, that is whenever I try to give it as system dot out dot println and whenever I write it as th dot my print 1, which will not happen. Similarly, when I give it as system dot out dot println, whenever I give it as th dot my print 2, this will also not work, which means my existing class member, that is the last third class member, cannot go down and try to communicate with the classes. This is not possible, which means my third class object can communicate, only with this, and it cannot communicate, which means it cannot communicate with main class, and similarly it cannot communicate with the second class also. This is not possible. I repeat, this is not possible for your third class in order to communicate with the main class, and it is not possible with your second class also. So this is something which you need to understand, how the data is passing. So which means whenever you are communicating with a class A to class B, the data will flow from A to B only. This reverse process, the reverse process of communication, that is B to A communication, is not possible. You cannot communicate like this. This is never possible. You can never communicate with your class. I repeat, you cannot communicate in the reverse process. Whenever the inheritance is happening, you cannot do the reverse process. That is, B class data cannot go to A class. A class data can only go to your B class if at all B is extending A. अगर हम लोग कहते हैं कि B is extending A,
देन ए का डेटा बी में आएगा, बल्कि बी का डेटा कभी ए के डेटा में नहीं जाएगा. This is what I wanted you to understand out of this particular program, right? This is how you use something called multi-level inheritance. So this is my main class, so I'll copy it. This is my main class, and this is my second class, and this is my third class. Right? This is how we write the program in order to understand multi-level inheritance. In today's class, we have seen three things. The first one, if at all you look at what is encapsulation and how do you overcome encapsulation also. During the encapsulation also, if you want to get the private member from one class to the other class, you can get it like this. And similarly, whenever you want to get your inheritance implemented, you have seen with one example. Similarly, you have seen multi-level inheritance also. Now we will try to look at the constructor with an example. In the yesterday's class I have explained it, but there are a lot of people who wanted me to make them understand about the constructor. So that constructor program, I'm not doing it right now because it is already late. So to explain that, at least I need some 20 minutes of time, and any program that we wanted to do it in classes also, it will take 20 minutes. So I'm breaking it here. Again, we'll do in Monday's class. I thought I'll finish off everything, but while explaining it, it took a lot of time. So Monday also we will do some more classes, some more programs on classes, and then in Tuesday we will do a higher level programs. I repeat, Monday का जो class रहेगा, वो Monday के class में कई और examples देखते हैं class programs, and then बाद में हम लोग higher level programs पे जाते हैं. मैं इतना टाइम इस पे स्पेंड कर रहा हूँ, ये क्लास में और ऑब्जेक्ट में इतना टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा में. अगर आप ये क्लास ऑब्जेक्ट, ये क्लास कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी ये प्रोग्राम नहीं समझ में आएगा. बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स है वो समझ में नहीं आएगा. So I repeat, everybody, please practice it. Understand what is class, understand what is object, because I'm spending so much time here, because if you don't understand this here, later all the programs that we do it in the whole month, you will never able to understand. So please spend your time. जो भी doubts रहेंगे please कैसाला group में पूछ लीजिएगा so that we can answer it. And if possible, we'll give you more material also to understand about this class and object. कई और लिंक भी हम लोग भेजते हैं ताकि आप अच्छे तरह से समझ सके ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट को. I repeat, everybody, please understand this, practice more about class and object, how the data is flowing. If required, we will also send you some additional links so that you understand the material from internet, right? Thank you so much all of you. Thanks for listening.